ब्रेक तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। सीरिया ਵਿੱਚ यूनाइटेड नेशंस के मोनीटर्स के मुखी जनरल रॉबर्ट मूड ने कहा कि उन्होंने दे मोनीटर्स ते भड़की भीड़ वालों हमले किए गए। जनरल मूड ने कहा कि मोनीटर्स के मिशन नूं रोकण दे लई उन्हां ते नेड़ियों गोलीबारी की गई। यूनाइटेड नेशंस विच बोलदिआं उन्हां कहा कि पिछले हफ्ते विच उन्हां नूं कई बार अजिहियां घटनावां विचों गुजरना पिया। रॉबर्ट मूड ने कहा कि जेकर UN मोनीटर्स लई हालात इसे तरह रहे तो उन्हां दा मिशन खतरे विच पै सकदा है। Violence, including shelling, small arms fire and other incidents are coming much closer, and we have been targeted several times over the last few weeks. This violence to the utmost in itself, but also because it made it very difficult to execute the mandated activities of my mission, led me to the decision a few days ago to halt the activities of UNSMIS. I made that decision based on the risks on the ground and based on the fact that the risks made it extremely difficult to implement mandated tasks. Many diplomatic initiatives are at work, contacts are being held, and hopefully conditions will be created one way or the other whereby the 6-point plan can make progress. Because, again, one has to say there is no other plan, no other game in town. There's no plan B. So the 6-point plan of Kofi Annan remains the reference, the framework for a settlement of this dramatic crisis. The discussion is not the mission in itself as an objective by and in itself. The discussion is about how should we change it, if we'll change it, how should we go forward best to serve the aspirations of the Syrian people who deserve it. The current violence level in Syria is for me a disrespect first and foremost to the Syrian people. Thank you. When somebody with a heavyweight, when a heavyweight in this United Nations organization speaks about the civil war in Syria, as if he is talking a joke, does he know what does it mean, a civil war in Syria? That means the explosion of all the area, not only Syria. That will impact on everybody in the area. People should be reasonable, calculate their words, think before speaking lightly, and act really with the sense of responsibility. ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਫੌਜੀਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਆਓ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। रशिया के मास्को विच फेल हुई गलबात तो बाद ईरान ने उम्मीद जताई है कि उसनू तेहरान परमाणु मुद्दा हल करने लई इस्तांबुल विच समा मिलना चाहिए। मास्को विच ईरान और कमांतरी शक्तियों विचकार गलबात बिना किसी नतीजे के असफल रही। यूरोपीयन यूनियन की विदेश नीति की मुखी कैथरीन एस्टन ने कहा कि 2 दिनों विच अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मन के नुमाइंदिਆਂ ਨਾਲ मास्को विच गलबात असफल रही। उन्होंने कहा कि हुण अगली मीटिंग सियासी मुद्दों की बजाय तकनीकी पद्धर ते की जाएगी। Just for your information, that statement is available on paper. 3+3 remain absolutely unified in seeking a swift diplomatic resolution to international concerns regarding Iran's nuclear program, based on the Non-Proliferation Treaty and the full implementation by Iran of the UN Security Council and IAEA Board of Governors resolutions. The E3+3 reiterated a balanced proposal set out in Baghdad, stopping 20% enrichment activities, shutting the Fordow nuclear facility, and shipping out stockpiled 20% enriched nuclear materials. It remains clear that there are significant gaps between the substance of the two positions. We've therefore agreed as follows.
an early follow-on technical level meeting in Istanbul on the 3rd of July to provide further clarification about the E3+3 proposal. The fact is that they did begin to address the substance for the first time. But there's a very, very long way to go. And I'm sure that Dr. Jalili would say that too. And that's why we're determined on the process I've identified to you to try and move forward. ईरान ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦੀਨੇਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਅਹਿਮਦੀਨੇਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ईरान ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अज वो इस मुकाम ते ने कि अपने नागरिकों की आज़ादी न्याय और हकों की पालना कर सकते हैं। इस दौरान बोलीविया के राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति को यकीन दिवाया कि वो सदा उन्होंने यकीन को बनाई रखेंगे। जाते जाते एक बार फिर नज़र मारते हैं वैस्टर्न न्यूज़ दी अहम खबरों ते। G20 मुल्कां दा शिखर सम्मेलन होया खत्म। यूरोप की मंदी नूं हर हाल विच काबू करने ते जताई गई सहमति। इजिप्ट ते तानाशाह हुस्नी मुबारक की मौत बारे हाले भी शंके बरकरार, मौत बारे नहीं होया कोई ऐलान। विकीलीक्स के संस्थापक असांज ने इक्वाडोर तो मंगी शरण, जौन शोषण के दोषों का कर रहे ने सामना। ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।